is jumping frog. कितने का? कितने का? नहीं Kineka Asi Nagaland, Morlaga Nam Niharika Ase. This is the land of Naga tribes. The journey from North India to Northeast of India was extremely long, but will it all be worth it in the end? We'll see. I traveled from Guwahati to Dimapur via overnight train. अब यहाँ से इन सब के साथ 4 घंटे तक का सफ़र बाकी है कोहिमा पहुँचने तक. But ये लोग हैं कौन? You ready for another back-breaking ride? Yes, always. We have been jumping and jumping on the road. और बाकी सब पीछे सो रहे थे इंक्लूडिंग यू, राइट? सो रहे थे तो क्या मतलब जंप नहीं कर रहे थे? मोनाली, क्या आप सो पाई? मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ. After the murder mystery I solved at night, it was amazing. ये झूठ पता नहीं बोल ही रही होगी, हम तो सो गए थे. भैया, और कितना बचा है रास्ता? अभी भी 2-2.5 घंटा रास्ता है. I am here with a group of 5 to 6 people and along with a company called Find a Bridge, I have come here to make them do a hike to Zuko Valley. It's another planet. After the trek gets over, they'll be going back to their home, but I'll be embarking on my solo journey to explore Nagaland. By this time, we already had our inner line permit ready to enter the state of Nagaland. नेशनल हाईवे की कंडीशन बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन से अलग निकलेगी. अ स्टेट रिच विद ट्राइबल कल्चर बट लैकिंग विद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट वी टूरिस्ट फॉरगेट टू पॉन्डर अबाउट. कोहिमा पहुंचते ही हम लोग एक होम स्टे की तरफ चल दिए. करंटली आई एम इन किग्वेमा एंड इट इज so near to the site of the Hornbill Festival which happens in December in Kisama. हम लोग यहाँ पे अपना सारा सामान रख के Zuko Valley ट्रैक के लिए embark कर रहे थे. Kigwema village से Wishwema side is near where the Zuko Valley trek starts from. We were hosted by this sweet lady Vikhono and by her little ones as well. In Nagaland, it was pouring and the weather felt pretty cold. And inside our homestay, we had some pretty great food and each other's company. अगले दिन ट्रैक स्टार्ट करने के लिए हम लोग बेसिक लगेज के साथ विश्वेमा विलेज पहुंचे. एस्टिमेट लगाओ तुम लोग कितने घंटों में पूरा करोगे? 3, 2, 4. ये जहर के साथ तो 4 कि पौधे ये जैसे चलेंगे 3 लेके चलते हैं और देखते हैं. अरे वो शिवाजी ने बहुत देखी है जैसे चलता डेवलपमेंट 10:02 नोटेड, इट्स ऑन कैमरा नाउ. एंड ये हैं वो क्रेजी लोग जिनके साथ ये ट्रैक यादगार से भी कुछ ज्यादा बन गया. यहाँ पे लीचीज नहीं. जहर तेरे में तो लगेगा नहीं लीचीज, पहले मर जाएंगे वो. यही करेगा, ये पीता रहेगा बीच बीच में और डालता रहेगा यहाँ पे मेरे बैग के साइड पे. पूरा लिया मत हंसा. ये ना बहुत सीधी दिखती है पर बहुत खतरनाक है इसका माइंड. उस टाइम में भी यही हंसा था पहले. शक्ल से एकदम स्वामी टाइप लेकिन वो हरामी टाइप. Before we see the rolling lush green hills of Nagaland, we had to pass this jungle with the help of these steep and slippery stairs. कितने दिन थे ऊपर? 2 दिन. बहुत खूब, बहुत बढ़िया. कुछ वैली में दिखा? हाँ? वैली में कुछ दिखा? वैली में बादल ही बादल थे. नहीं पूरा क्लीन दिखेगा. प्लीज़ आप इस ट्रैक को एक प्लास्टिक फ्री जोन रखकर ही चलिएगा. यहाँ की लोकल्स रोज़ इस वैली की सफाई में अपना काफ़ी टाइम और मेहनत इन्वेस्ट करते हैं. एंड Zuko आफ्टर एन आवर वेलकम्ड अस.
规则走，以后嘞，以后嘞，以后嘞，以后嘞，为什希望说，为什么的有嘞？为的些多，那些个规则走。 इसके लिए ये स्पेशली हाइक प्लान हुआ था। लास्ट ईयर आई प्लान दिस एंड लास्ट ईयर नागालैंड में फ्लड आ गया था। साल फाइनली मैं इधर हूँ। दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट करंटली। ज़ुको का मतलब होता है बेजान, लेकिन इस ख्वाब से भी ज़्यादा सुंदर जगह को देखकर ये बात कौन मानेगा। दिस वैली स्पैन्स फ्रॉम नागालैंड टिल मणिपुर। And these charred black trees, what about them? Zuko is a mysterious place, you see. कहानियों से भरा and बुना हुआ. People say these trees were burnt in a forest fire, and others say the spirits of Zuko don't let these trees turn green. Now who knows? So हमको वैली में घुसे हुए 1 घंटा हो चुका है and we are trying to reach a guest house में जहाँ पे हमको स्टे करना है आज. एंड वो वहाँ कहीं है और हमको बार बार ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग फार, इट्स नॉट गोइंग नियर, बट आई थिंक वी जस्ट गोना टेक हाफ एन आवर मोर टू रीच देयर. Here we are. 3 से 3.5 घंटों के बाद हम एक सिंपल से गेस्ट हाउस पहुंचे. इसी में लगा दूंगी। चाय, चावल, नागालैंड की रहस्यमय पहाड़ियों के नज़ारे और ढेर सारी बातें इंसान और भूतों की. मॉर्निंग वर्ल्ड. सुबह होते ही सब एक सपने जैसा लग रहा था. रात को नींद इतनी अच्छी तो नहीं आई, लेकिन मैंने मेरे मॉर्निंग व्यू जैसा आज तक पूरी दुनिया में ना कुछ देखा, ना कभी महसूस करा. This is the happiest moment currently. No, this is the happiest moment currently. Even while heading back to the base, we all felt the joy of experiencing and walking in these rolling hills. It's like you can't find this place anywhere in India. It's just you and the nature. I want to come back to see Zuko lilies bloom in the month of July. Maybe try to climb the Chafku peak. I know, too ambitious. Or attempt to reach the Zuko Valley from Jakhama side. Maybe come back to spot one of those white elephants these folklores talk about. Or see the frozen waterfall during winters when the greens of the valley actually turn soulless. Chahe reason ya ichha koi bhi ho, I have resolved to come back here again because once is never enough, especially in Zuko. It's going to be my 123 times. We left our footprints and took a few memories back with us. The path to take. Did you understand? Kusama BNK. Riches. And I loved it. कुछ और बोलने वाली रोटी. Most of the solutions to our problems, you can find them on your hike or trek in the jungle. Chazu leaf, good to keep your blood pressure in check. It can go nose bleeding and it also acts as a mouth freshener. अभी भी पोड़ा वीडियो चालू हो गया क्या ये? बोलो कुछ. समर में स्टिक भी काफी बड़ी हो जाएगी. Dirty. तुम लोग सब पे क्या? हाँ मैंने बोला ठीक है, मैं सिर्फ कितना घुसा लूँगा. आज कौन सी मूवी का चीप फाड़ करता है ये बताओ. आग पे बैठ के. So see you in episode 2. Leave some love for Zuko and Nagaland.